So now come to discuss home rule movement. Home rule movement. Aims and objective और result. तो देखिए हम यहाँ home rule movement, aims, objective, development, and the outcome. इसको कैसे आप ये करेंगे तो देखिए, पृष्ठभूमि देखिए, बैकग्राउंड देखिए। 1916 का कि एक्सट्रीमिस्ट और रिवॉल्यूशनरी जो क्रांतिकारी और उग्रवादी जो दृष्टि थी, इंडियंस के एक सेक्शन का, ये पता है कि एक्सट्रीमिस्ट एंड मॉडरेट्स थे। एक्सट्रीमिस्ट हावी था तात्कालिक सिचुएशन में भारत में, और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे होम रूल मूवमेंट, होम रूल चाहते थे। अब इसको देखते हुए कि ब्रिटिश ने क्या किया कि ब्रिटिश एडॉप्टेड 2-8 पॉलिसी। एक पॉलिसी ये था कि ब्रिटिश का कि टू सेपरेट द नेशनल मूवमेंट और टू सर्टिफाई द मॉडरेट्स। दो चीजें, दो बातें थी। एक था ये कि ब्रिटिश का जो बात कर रहा हूं मैं, सप्रेस नेशनल मूवमेंट, ब्रिटिश चाहते थे सप्रेस नेशनल मूवमेंट। और नेशनल मूवमेंट को सप्रेस करने में क्या किया ब्रिटिश ने? पहली बात तो यह थी कि पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, जिसका दमन की नीति कहते हैं। और सेकेंड पॉइंट था कि डिवाइड इंडियंस, डिवाइड इंडियंस, भारतीयों को बांटना था। और भारतीयों को बांटने में पर्टिकुलरली हिंदू एंड मुस्लिम को, राइट। और दूसरी बात थी कि मॉडरेट्स को भी, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मेथड्स में विश्वास करते थे अपने राष्ट्र के लिए, उनको भी सेटिस्फाई करने का प्रयास किया। ग्रेजुअल, वो कैसे किया? ग्रेजुअल रिफॉर्म्स इन द कंट्री। अब ग्रेजुअल रिफॉर्म्स इन द कंट्री, जैसे आप देखिए कि 1919 का जो रिफॉर्म्स आया, तो इस तरह से देखेंगे। इन डिटेल्स में मैं बोलूंगा स्टेप बाय स्टेप जो हैपनिंग्स इन दोज डेज हुए कि होम रूल मूवमेंट जो तिलक बीजी, बाल गंगाधर तिलक और मिसेस एनी बेसेंट जो आयरिश लेडी थी, जिनके बैनर के तले हुआ, इन होम रूल मूवमेंट डिड नॉट रिजल्ट इन एज सच। लेकिन एक बात जरूर थी, इट कंटिन्यूड द बर्निंग ऑफ फायर्स ऑफ नेशनलिज्म एमंग द इंडियंस। ये बात थी। और फिर 1919 के जो कानून बने ब्रिटिश के द्वारा, 19, वो भी इसका रिजल्ट था। अब एक एक देखते हैं हम इसके
स्टेप्स को, जैसे इंट्रोडक्शन की बात करते हैं हम लोग। इंट्रोडक्शन, द होम रूल मूवमेंट was the response of Indians to World War I during 1914 to 1918. Unlike the aggressive actions of Indian revolutionaries abroad, such as the Ghazal movement, the Home Rule movement used a more organized and peaceful approach. मतलब होम रूल मूवमेंट का जो अप्रोच था वो ज्यादा ऑर्गेनाइज था और वो पीसफुल था। गदर मूवमेंट भी रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट था, तो इससे ज्यादा होम रूल मूवमेंट जो था वो अधिक ऑर्गेनाइज था और पीसफुल था। याद रखिएगा, ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल। ऑर्गेनाइज्ड प्लस पीसफुल। एम क्या था? होम रूल मूवमेंट एम्ड टू अचीव सेल्फ गवर्नमेंट, जिसे होम रूल कहते हैं, एंड dominion status within the British Empire, similar to Australia, Canada, and New Zealand at the time. Any patient and Balgandhar Tilak were the leading figures of the movement, representing a shift toward more Asiatic politics in India. Factors leading to the rise of the movement. क्या क्या factors? The factors में था discontentment among the Indians, भारतीयों के बीच में असंतोष। World War I caused political divisions among Indian leaders. Moderates and liberals supported the British, while extremist revolutionaries opposed the war. Many nationalists believed a stronger public pressure was needed to secure self-rule. Next to discontentment among the Indians, now disagreement with reforms, जो संशोधन थे ब्रिटिश के द्वारा भारत में, उसके प्रति जो भ्रांति थी। The Morning into Reforms 1909, 1909 का 9 रिफॉर्म सोचा। The Morning into Reforms 1909 failed to meet the aspirations of Indians. Now come to the financial hardship, wartime taxation, rising prices, युद्ध के समय में अधिक टैक्स बढ़ाना, और फिर बाजार में कीमतों का बढ़ना, and general hardship made the public more willing to join protests. And then come to the exposed miles of superiority, the war among
imperialist powers reveal the fragility of the so-called white superiority, inspiring Indians to demand self-rule. यानी जो भी विशेष रोग थे जिनको हम गोरे लोग कहते हैं वो महसूस करते थे कि वो इंडियन से सुपीरियर थे और इस कारण से भी वह इंडियंस सेल्फ रूल चाहते थे. Let me go to this point. Now come to the leadership readiness. After his release from jail in 1940, Tilak reassured both the government and moderate leaders of his non-violent intentions, his short reforms, rather than overthrowing British rule. Any patient inspired by Ireland's Home Rule League expanded her activities to include advocating for self-rule in India. आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर. Now then come to the formation of the league. We are talking to the league formation. The coordination and challenges. Tilak and Besant recognized the need for cooperation between the moderates and the extremists to make the movement successful. However, efforts to unite both functions during 1914 Congress session failed. 14 में फेल हो गया था. हालांकि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट चाहते थे कि यूनियन हो जाए उनका. नेक्स्ट, सेपरेट लीग्स. कम टू द पॉइंट. सेपरेट लीग्स. तिलक के बारे में देखिए. तिलक ने यहाँ पे ये रखा. बाल गंगाधर तिलक फॉर्म्ड इन 1916, 1916 में. It operated in Maharashtra, excluding Bombay, Karnataka, Gujarat, and central provinces, with its headquarters in Delhi. It emphasized demands like Swarajya, home rule, linguistic estates, and वर्निकुलर एडुकेशन. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे को आप नोट करेंगे. नाउ कम टू द एनी बेसेंट लीग. इट एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1916. यानी कहने का मतलब एनी बेसेंट से पहले वीजी तिलक ने होम रूल लीग को बनाया था. एस्टैब्लिश्ड इन सितंबर 1914 इन मैड्रास. वो जो बनाए थे वीजी तिलक, उनका था महाराष्ट्र में, और ये जो बनाए थे मैड्रास में, एलिवेशन में, दोनों 1916 में ही. इट कवर्ड द रेस्ट ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग बॉम्बे सिटी. ये भी काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है. एलिवेशन लीग had 200 branches and was loosely organized, with leaders like George and B.W. Walia and C.P. Ramaswamy.
Now then come to the support and indictments. The movement gained actions affecting leaders from the Indian National Congress and all India Muslim League, post-Lucknow Pact of 1916. Prominent figures such as Motilal Nehru, Jawaharlal Nehru, Shiar Das and Lala Lajpat Rai joined the agitation. Okay. Then come to the opposition from Saturn group. Anglo-Indians, many Muslims and non-Brahmins from the south feared home rule might lead to domination of high caste Hindu. Then come to the objectives and activities. Objectives and activities. किसका होम रूल का? अब पहला तो क्या था? स्प्रेडिंग अवेयरनेस, जागरूकता को फैलाना. पब्लिक मीटिंग्स करते थे इसके लिए, न्यूज़पेपर्स, pamphlets, posters, plays, and religious songs were used to educate people about home rule. Moreover, libraries and reading rooms, reading centers were set up to disseminate knowledge about national politics. We'll come to public education and advocacy. Classes on politics and local government activities were organized. Propaganda expanded to less politically active areas like Gujarat, Sindh, Odisha. यहाँ पे ये point है, आप देख लें. And then come to the social work and funds collection. Volunteers managed in social service while raising funds for the movement. Now look at the impact of global events. The Russian Revolution of 1917, 17 की रूस की क्रांति, inspired and motivated the movement further. Government responses cracked down on the movement. The government responded harshly, particularly in Madras, where students were banned from attending political meetings. Tilak faced restrictions including being barred from entering Punjab and Delhi. Annie Besant and her associates George Ende and B.P. Waya were arrested in June 17, triggering nationwide protests. Then comes the reaction. In response, Sir Subramanian Iyer renounced his knighthood की जो उपाधि इन्हें मिली थी, Sir Subramanian Iyer को इन्होंने सरेंडर किया प्रोटेस्ट में. Tilak advocated passive resistance while public outrage over Besant's arrest grew. She was released in September 1917 following public and political cases.
Now come to the decline of the movement. Region, lack of organization. The movement lacked a strong structure to sustain its momentum. Second point, communal riots during 1917-18. Religious tensions weakened unity among Indians. Then the limited public participation, although it engaged educated Indians and urban populations, it failed to reach the rural masses effectively. Then come to the rise of Gandhi. Gandhi's approach of Satyagraha, non-violent civil disobedience, gained popularity, overshadowing the home rule movement. Then come to the division and leadership issues. The Monty-Kemptor reforms, 1918, created divisions within the movement. Tibet's departure to England and lessons in decisiveness left the movement leaderless. Now come to the achievements of home rule. Achievements and home rule movement. Shift to mass politics. It marked a transition from elite theoretical politics to mass participation. ये काफी अच्छा गेम है. Preparing the ground for Gandhian movements. Good point. And एक second point ये है कि political awareness, राजनीतिक जागरूकता भी आई. The movement expanded political consciousness to regions in Punjab, Sindh, Gujarat, Odisha, previously less involved in politics. Then come to the nationalist unity. It fostered collaboration between moderates and extremists, strengthening Indian nationalism. Then come to the impact of reforms. The legislation influenced the August 1917 Montagu Declaration, which promised eventual self-rule for India. Then the legacy. In 1920, the Home Rule League merged with the Congress, paving the way for unity or united front in the struggle of independence. Now come to the Home Rule movement and the Bihar. Bihar के संदर्भ में Home Rule movement. Key points are देख लीजिए. Bihar played an active role in the movement. On December 16, 1916, at a meeting in Patna, Mazhur Haq was elected president of the local Home Rule League. Annie Besant visited Bihar in 1918. इस 18 में Annie Besant बिहार आएंगी, holding meetings and inspiring local leaders like Hasan Imam, Sajdanand Sinha, Sarfraz Hussain Khan to intensify efforts for political reforms. नाम ये सबका याद रखेंगे बिहार के संदर्भ में. The Home Rule movement was a significant chapter in India's freedom struggle, creating widespread political awareness and using diverse sections of society.
Uh, so both sections of the society were united for the freedom movement. While it eventually uh, faded, uh, its contributions laid the groundwork for future mass movements under Gandhi's leadership. So this way, you have seen that home rule movement with the leadership of E.J. Tilak and Miss Annie Besant ignited the fires of racism and gave the ground for the future movement for the freedom of the country under the leadership of Mahatma Gandhi. Let's offer this lecture. Thank you.